10 फीट बाय 15 फीट के हाउस में 10-10 लोग सो रहे हैं। लोग सारे झूठे बोलते हैं। जब अगर किसी को बुखार सर्दी है तो वो लोग बताते नहीं। हमारे एरिया में चिल्लाते हैं, अपने खुद के घर में नहीं रखने दे रहे हैं। My wife has been quarantined because of dialysis patient. My 2 kids, one is 10 years, one is 6 years. They are alone. जो एम्बुलेंस का भाड़ा 20,000 रुपये बोला, तो मैं किधर से क्या करेगी वो लोग। This is the largest slum in Asia. It's also India's largest COVID problem right now. Alright, so we're at the BMC office today and we're going to try and speak to those people who are in charge of Dharavi. Now, Dharavi is the biggest problem in the country. And given the density of the people who are living there and the number of cases and the fact that social distancing is almost impossible, it's interesting to meet those people who are facing that challenge right now. India currently has over 2 lakh COVID cases. And over 20% of these cases are in one city, Mumbai. And the biggest problem for those battling the virus in Mumbai has been Dharavi. Now, this one slum has over 1,770 cases, and it threatens to derail the entire effort to control the virus if not handled quickly. So we decided to speak to Kiran Digawkar, the Assistant Municipal Commissioner who's in charge of Dharavi and is at the helm of the battle being fought in its gullies. 2.5 square kilometer ये धारावी, hardly 2. And 8 to 10 lakh people है. Nobody have authentic count भी नहीं किसी के पास. अगर आप कोई भी एक हाउस मैं आपको खोल के दिखाऊंगा वहाँ पे एक 10 फीट बाय 15 फीट के हाउस में 10-10 लोग सो रहे हैं। तो ये 10-10 लोग सो रहे, तो दूसरा ऐसे कि सबको कॉमन टॉयलेट यूज़ करना है। 80% ऑफ देम आर यूजिंग कॉमन टॉयलेट। वहाँ पे क्यू लग रही है टॉयलेट्स में। आई हैव 2 ऑप्शंस। एक तो सिट एंड कीप क्राइंग कि क्या है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, मैं क्या करूँ सर सोशल डिस्टेंसिंग। और दूसरा था कि एटलीस्ट स्क्रीन करो, जिसको बुखार है, जिसको सिम्टम्स है उसको आइसोलेट करो, उसको बोलो कि तू यहाँ आ जा। So the civic body, the BMC, has picked a different route. After attempts at making locals follow the social distancing norms failed miserably, the corporation has now begun an attempt to screen every single household for fever. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, घर में रहनी चाहिए। तो यहाँ के लोग सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते। बाहर भी बैठा है तो डिस्टेंसिंग रखना चाहिए मैडम। अभी देखो ये बैठा ना, देखो कितना नजदीक बैठा है। We decided to visit a screening team which is going door to door and to tag along. The starting point every morning is here, Chota Sion, a branch of the Sion Hospital that does checkups for pregnant women and basic vaccination work in a non-COVID world. Right now, health workers who would have otherwise been distributing polio drops door to door are the new screening workforce for COVID in Dharavi. तो आपकी टीम में से किसी कोई पॉजिटिव आया? आया ना, कितना लोग है? कितने जन? 3 जन आए। 3 जन आए। और वो लोग अभी ठीक है कि? अभी ठीक है। हाँ 2 ठीक जन है, तो काम पर आते हैं, एक एडमिट है। 3 जन काम पर आते हैं, अब एक है। अभी एक वहाँ पे ही है, क्वारंटाइन ही है। 2 जन काम पे आते हैं। 2 जन काम पे आते हैं। तो आपको डर लगता है कि मतलब आप वायरस लेके घर में किसी को लगे? वही तो मेन प्रॉब्लम है हमारा, वही तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग का काम करते हैं फिर घर में जाते हैं, तो हमारा भी परिवार है, इसलिए डर लगता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम नहीं करेंगे ये ड्यूटी, इसके बाद बुलाओ हम वापस आ जाएंगे, तो मानेंगे? नहीं मानते ना, इसलिए तो आना पड़ता है। पेमेंट नहीं निकले ना, अभी 2 महीना नहीं आई तो पेमेंट नहीं निकले मुझे। मीन से कोरोना आया करके डर लग रहा है हम लोग को, नहीं तो ऐसा तो हम लोग के बाकी सब काम करते थे हम लोग, ऐसा कोई डर नहीं था। So the tough part about it is the congestion. You can see there are people living 3 floors above each other, and on an average there'll be 5 or 6 people in one room. So they're screening one person from each house, and they're taking down the number of people in each house. But really the masks are only popping in. People are putting their masks on after we walk into the lane, and they're taking it off as soon as those white suits disappear.
But many here are angry with the government for leaving them destitute and without work or food through the lockdown. And that makes it difficult for these health workers to get the people to be cooperative or forthcoming with information. கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சிருக்கு சொல்லுங்க. ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்தா காசு சரியா போதா? எல்லாரும் சாப்பிட முடியுமா? எங்க புள்ள குட்டிங்களாம் விதவை பொம்பளைங்களாம் எங்க போய் சம்பாதிப்பாங்க? ஊருக்கு போகிறதுக்கும் வழி இல்லை. நாங்கள் எங்கேயோ போய் ஒரு கச்சரா பொறுக்கி கூட கஞ்சி குடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வழி இல்லை. நாங்கள் எந்த விதமாக நம்ம அம்மா கிட்டே உக்காந்துட்டு கையேந்தி கிடக்கிறோம். பிள்ளைங்கள்லாம் பட்னி, ஒரு டைம் சாப்பாடு ஒரு டைம் பட்னி. இப்படி படுத்துருந்தாக்கா அரிசி கிடையாது, பருப்பு கிடையாது. எங்களுக்கு இந்த கல்லிக்குள்ளே வந்து இன்னும் யாரும் கேட்கல. செம்பூர் ட்ரெஸ்ட்லேருந்து வருது சாப்பாடு. அது வர வரையும் உட்காந்துக்கணும் நாங்கள் 3 மணி வரையும். अभी क्या करें, जो है रखे थे वो खा रहे हैं. 2 लड़के हमारे एक एयरपोर्ट में हैं और एक छोटा मोटा कारोबार करता है. तो अभी एयरपोर्ट भी बंद है समझो 2-2.5 महीने से. तो वो भी बैठा हुआ है. अभी चालू होने वाला चालू हो गया है, लेकिन वो भी ड्यूटी बहुत हार्ड उनकी ये भी दे रहे हैं. वो लोग बोलते हैं करना है करिए, नहीं तो जाइए यहाँ से. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको? तो सबसे चैलेंज क्या होती है आपको? लोग सारे झूठे बोलते हैं. जब अगर किसी को बुखार सर्दी है तो वो लोग बताते नहीं है कि हमें बुखार सर्दी खांसी बुखार है. जो हमारा पोशाक देख के डर जाते हैं वो कि उनका हमें उठा के लेके जाएंगे कहीं. लेकिन हम लोग उनके भलाई के लिए ये सब करते हैं. अगर वो सच बोलेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे. अगर झूठ बोलेंगे तो और फैलाएंगे और खुद को भी तकलीफ होगी. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. So teams like this one have managed to screen nearly half the population. That's 3.75 lakh people. Anyone with a fever is immediately isolated. Over 7,500 people are in quarantine facilities inside Dharavi. Public schools have been turned into makeshift spaces. We visited one such public school where the classrooms have been turned into family rooms and beds are on standby. ऑन एन एवरेज हम 50 to 100 टेस्ट करते हैं एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे. उसमें से 20 एक पॉजिटिव निकलता है, 15 से 20 पॉजिटिव निकलता है. और उनको आप शिफ्ट करते हो? उन्हें शिफ्ट करते हैं हम CC2 में. Families here tell us their loved ones were serving on the front lines when they contracted the virus, and in some cases a lot of money was made by unscrupulous private clinics before they sent the patient to the government for a COVID test. 40-45 में आता था ना, वो थर्मामीटर लगाते थे तो बोले नॉर्मल है, बुखार ऐसा कम है, तो गोली देते थे. हम लोग 10-15 दिन उसी में निकाला. वो बोले अच्छे है, किधर जाने की ज़रूरत नहीं. प्राइवेट में उधर मैंने एडमिट किया था उनको. पहला मुझे हमारे इधर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे उधर भी थोड़ा बहुत पैसा खाया डॉक्टर ने मेरा. तो उधर निमोनिया बताया, एक्सरे निकाला, निमोनिया बताया. तो साई दवाखाने में मैंने 3 दिन एडमिट किया. तो कोविड का टेस्ट किया तो 4थे दिन मुझको उसने ये बताया कि पॉजिटिव है. तो मेरा उधर 1,30,000 रुपये उसने बिल किया. तो उन लोग ने मुझे एम्बुलेंस का भाड़ा 20,000 रुपये बोला. तो मैं किधर से क्या करेगी बोलो. और ये जो हॉस्पिटल है ना मैडम, ये जो पैसा खाते हैं सब प्लीज़ बंद करो. गरीब लोग किधर से पैसा लेके आएंगे. You know, the front lines are not being defended just by doctors and nurses. There are hundreds of other invisible workers who are tasked with cleaning and sanitizing, for whom the need for money outstrips the fear of catching the virus. But here's the thing, in many cases, this staff is taken on contract, so they don't get the same facilities or the benefits that government employees do. हमारे एरिया में चिल्लाते, बोलते बाहर से आने का नहीं, इधर गए तो काम पे उधर ही पड़े रहो, लॉकडाउन खुलेगा जब भी आओ. अपने खुद के घर में नहीं रखने दे रहे हम लोग ऐसा. अब पैसे की ज़रूरत थी बोल के हम लोग भी आ गए काम पे. हम लोग के घर में 1 रुपया नहीं है, क्या करेंगे? भीख मांग के खाएंगे. कोई देने वाला भीख मांगने से भी कोई देने नहीं वाला. बाहर जाएगी तो उधर पुलिस वाले डंडे वंडे मारते हैं, ID दिखाओ. अगर सामान लेने जाएंगे पेशेंट लोग का, पुलिस वाले मिल गए रोड पे तो हम लोग को भागना पड़ता है. दिन का हमको 300 रुपये मिलता है. और ये आपने रेनकोट पहना है? हाँ, ये PPE नहीं है, ये रेनकोट है. रेनकोट है. वो दिया है तो हम वही पहनते ना. हाँ. और कहाँ कहाँ जाते हो आप लोग स्प्रे मारने के लिए? जिधर क्वारंटाइन किया है और जिधर बिल्डिंग में किसको क्वारंटाइन किया है, जिसके रूम में डेट हुआ है वो रूम में. अच्छा, जिनके रूम में डेट हुआ है वहाँ डेट भी हुआ रहेगा तो कंप्लीट आया तो हमको जाना ही पड़ता है. BMC की तरफ से कंप्लीट आया तो हमको जाना ही पड़ता है. आप लोगों की टेस्टिंग होती है? हाँ, आप लोगों की टेस्टिंग हो रही है? नहीं टेस्टिंग नहीं है. टेस्टिंग नहीं हो रही. टेस्टिंग करने वाले हम. किट भी दिया है. ये किट जिधर हम लोग को अर्जेंट में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा ना, जिधर उधर घुसना है ना, तो ये किट पहनते हैं हम लोग. ये प्योर किट है. ये क्या ऐसा नॉर्मल के लिए ऐसा.
We happened to meet an employee of a private testing lab who was in Dharavi to collect samples. What started off as a casual chat made us realize that the price is being paid by entire families when one person is on the front line. Is your family nervous about the fact that you are doing this work? Ma'am, my wife, she is working in a workout. She has been quarantined because of dialysis patient. I am staying out of my house. My two kids, one is 10 years, one is 6 years. They are alone. Alone? That individual is working as a technician. I didn't even get a chance to ask him his name. He's working as a technician who's collecting samples of people, and his children are alone because his wife is in quarantine. She's working at a hospital, and he's not going home out of fear that he will give it to them. Now, as of the 29th of May, 99% of the BMC's ICU beds in Mumbai were already occupied. 72% of the total ventilators in the city were in use. So when a patient from Dharavi takes a turn for the worse and needs oxygen, both ambulances and hospital beds are hard to come by. The wait can be fatal. काफ़ी लोग हैं जो ब्रेथलेसनेस फील होती है और उनको लेके जाना पड़ता है तुरंत हॉस्पिटल में, लेकिन कभी बेड नहीं मिलता है, कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि सम शॉर्टेज ऑफ ये रिसोर्सेज, इट्स लाइक कोऑर्डिनेशन का. अभी येस्टरडे नाइट मैंने एक मैसेज देखा है कि नायर हॉस्पिटल में बेड हुआ है लेकिन एम्बुलेंस इज बिजी इन ड्रॉपिंग सम अदर पेशेंट. There are several things going on in Dharavi. Obviously, point number one, people are being screened, people are being segregated, quarantined, and there is a 200-bed facility that's under construction where every bed will have its own oxygen cylinder, thereby avoiding the need to transfer people out of Dharavi into hospitals. What is your expectation of increase of cases in Dharavi now? See, rather we concentrate on treatment, and of course if we test more, if we screen more, if we find people and test them, figure are going to increase. So we are not bothered about that. What we are bothered about the treatment. Can it withstand the monsoon? Can it withstand the monsoon? Of course. It is been designed in that way only, that it's a waterproof shed with waterproof material to cover from all sides. It has enough toilets, bathrooms, oxygen supply facility, water supply, everything it is equipped with all the facilities here. Well, there's some good news and some bad news. The good news is that screening and isolation seems to be working as a method, coupled with the fact that many people from Dharavi have left the city in thousands over the last couple of weeks. The pace of transmission seems to have slowed down. On last count of data, cases in Dharavi are actually doubling once every 31 days, compared to once every 3 days when the virus first hit. This is very good news. But here's the bad news. Mumbai's annual unforgiving monsoon is just around the corner. And with it, invariably will come a breakout of mosquito-borne diseases like malaria, dengue and chikungunya. All of which share the same fever and flu-like symptoms of COVID, making the fever-based screening and testing method very complicated. For the team working on the ground in Dharavi right now, it's a race against time.